Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is motion and speed. Let's learn about time, simple pendulum, units of time, motion, speed, units of speed, making a distance time graph. Everywhere around us, we see many bodies moving, a speeding car, people walking or running, boats sailing in the river, football rolling on the playground, or a bird in flight. These are all examples of bodies in motion. What is motion? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to other objects. The other objects which are not moving are therefore at rest. A body that does not change its position in relation to its surroundings is said to be at rest. तो बेसिकली आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि लोग भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बोट सेल कर रही होती है, लोग स्विम कर रहे होते हैं, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, बस व्हीकल सारे चलते हैं. कोई भी ऐसी चीज जो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में चल रही होती है, वी से दैट थिंग इज मूविंग. अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है. When a body is in motion, there is often a need to measure the quality of this motion with respect to time. A body moves faster than another body if it travels larger distance with the elapse of same time interval. In the same way, there is a need to measure the elapse of time between two events. तो आपको ये measure करना important हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस speed में with respect to time travel कर रही है. एक चीज़ दूसरी चीज़ के comparison में तेज या धीरे travel करती है, लेकिन with respect to time वो कितना time ले रही है, कितना interval ले रही है, वो जानना ज़रूरी हो जाता है. Many of you board the school bus early in the morning at the bus stops in your colony. While the bus is driving past, the position of bus changes with respect to other objects like trees, houses and lampposts by the roadside. Thus, the bus is said to be in motion as it changes its position relative to the surrounding and with the elapse of time. Children sitting in the bus are in motion relative to houses, trees and other objects on the roadside, but they are stationary relative to each other. तो आपके जैसे buses होती हैं, जब आप बस स्टेशंस पे खड़े होते हैं तो बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन में, हाउसेस के रिलेशन में, लैम्प पोस्ट के रिलेशन में, आपके रिलेशन में बस मूव कर रही होती है. वो जो बच्चे अंदर बैठे होते हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द थिंग्स अराउंड देम मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपस में देखा जाता है तो वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एट रेस्ट होते हैं. The terms motion and rest are thus relative terms and are dependent on who and where the observer is. इसीलिए जो आपके motion और rest है ये relative terms हैं. देखना होता है कि किसके comparison में, किसके relation में आप object का moving यानी कि motion या फिर resting position देख रहे हैं. Fact file. A water clock is a time-keeping device that works on the principle of inward or outward regulated flow of water. In the inward regulated flow method, a bowl marked with lines is filled with water. The flow of water is regulated. The lines are marked to track the flow of water that indicate the टाइम. तो आपका जो वाटर क्लॉक होता है वो बेसिकली अलग अलग लाइंस उसमें फॉर्म्ड होती हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम वो बताता है कि आपको कोई भी एक चीज करने में कितना टाइम लग रहा है. Time is the lapse between the regularly recurring events. We give reference of time as past midnight, after lunch break, BC and AD. Human beings have felt the need to keep track of time from ancient times. In olden days, people did not have watches or clocks. They used the various events which repeated regularly to count time interval. They used the time from sunrise to sunset, the length of shadow, one full moon to another full moon, and the change of seasons to measure the interval of time. So if you hear your mummy saying on a Sunday to a fruit vendor, come next Sunday, she means come after 7 days. Likewise, full moon to full moon is 15 days or a fortnight. तो पहले के टाइम में जब वॉचेस या क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी तो लोग सनराइज और सनसेट, जो शैडोज की फॉर्मेशन हो रही है, पूरा फुल मून जब एक दिन निकलता है उसके कितने दिन के बाद दूसरा फुल मून निकलता है, उसके बेसिस पे टाइम को ऑब्जर्व करते थे.
अगर कोई भी जो आपका एक फुल मून होता है सेकेंड टाइम जब आता है तो प्रॉपर 2 हफ्ते लगाता है, यानी कि फोर्टनाइट। एक फुल मून आज निकलेगा, दूसरा फुल मून बिल्कुल उसके फोर्टनाइट के बाद निकलेगा। Need to measure time. The need to measure time was felt by human beings a long time ago. In every civilization and every culture, however ancient, there has been evidence of people keeping track of the passage of time. In very ancient times, people used to keep track of the passage of days. As the complexity of their lives increased, people felt the need to split the day into smaller periods. As civilizations grew, more ways of measuring time was devised. तो पहले के लोगों को, बहुत ही पहले एंशिएंट टाइम पे लोगों को ये नीड फील हो गई थी कि उनको टाइम का पता होते रहना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करी, एक दिन को भी इन्होंने छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। Today we measure time for a variety of applications. We need to meet our clear-cut schedules. The doctor checks how many times our heart beats in 1 minute. We need to know when a train or plane will arrive, what is the duration of the journey, how long a TV program or a movie will take, the amount of time a computer will take to perform an operation, and so on. The list is endless. तो आजकल टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि डॉक्टर को अगर देखना है कि आपकी हार्ट बीट ढंग से काम कर रही है या नहीं तो वो पर मिनट के हिसाब से देखते हैं। आपकी अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं जो टाइम पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि कितने घंटे में ख़त्म होने हैं, कितने दिन में, कितने महीने में या फिर कितने साल में। तो टाइम का अलग अलग जगहों पर आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। Do you know some early sundials can be seen at Jantar Mantar in Delhi and Jaipur? तो आपको काफ़ी सारे sundials दिखाई देंगे दिल्ली के जंतर मंतर में या फिर जयपुर में भी, जिसकी मदद से ये टाइम का पता लगाते थे। These were built by महाराजा जय सिंह in जयपुर। ये जयपुर में जो बनाए गए हैं जंतर मंतर पे, ये महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाए गए हैं। In olden days, people used to keep track of time by observing the position of the sun in the sky. The time between one sunrise and the next was known as a day. तो पहले के टाइम पे इस तरीके से पता लगाया जाता था कि आज अगर सनराइज हुआ है, फिर अगले दिन जब दूसरी बार जब सनराइज होता था तो लोग कहते थे कि अब दूसरा दिन आ चुका है। In the same manner, the time interval between one new moon and the next was known as a month. Later, people started building various instruments for measuring time. इसी तरीके से एक न्यू मून जब दूसरा न्यू मून आता था तो कहते थे कि एक पूरा महीना खत्म हो चुका है। Sundials, water clocks and hour clocks were some such instruments used to estimate time. Sundials work on the principle that the length of the shadow of an object increases and decreases during the day with the position of the sun. One of the sundials built by Maharaja Jai Singh of Jaipur is located at Jantar Mantar in Delhi. तो आपके जो सनडाइल्स होते थे वो अलग अलग तरीकों की तरह यूज़ करे जाते थे, जैसे कि लोग पुराने टाइम में जब वॉचेस या क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी तो दिन भर में जब जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे आपकी जो शैडोज परछाइयाँ होती हैं वो भी घटती या बढ़ती हैं, जिसके बेसिस पे वो पता लगाते थे कि दिन का कौन सा टाइम चल रहा है। द रोमन्स यूज्ड अ सैंड क्लॉक फॉर मेजरिंग टाइम। अ सैंड क्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 2 राउंड ग्लास बल्ब्स। द 2 bulbs are separated by a narrow glass tube. The upper bulb is filled with a fixed amount of sand that passes through the tube into the lower bulb in a fixed interval of time. Modern accurate clocks were made only after the Italian scientist Galileo discovered the principle behind the working of a pendulum. Let us study about a pendulum. तो पुराने के टाइम पे जो एंशिएंट राजा महाराजा हुआ करते थे वो सैंड का यूज करते थे। ये जो आपके साइड में सैंड क्लॉक का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें 2 ट्यूब्स होती थी। ऊपर वाले ट्यूब में सैंड भर दिया जाता था और धीरे धीरे अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में वो धीरे धीरे वो सैंड नीचे गिरता रहता था। बहुत ही बाद में इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो, उन्होंने पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्लॉक की डिस्कवरी करी। डू यू नो one of the oldest water clocks was found in the tomb of Egyptian pharaoh Amenhotep I, buried around 1500 BC. सबसे पुरानी जो आपकी वाटर क्लॉक थी वो एमेनटॉप 1 को जब बरी करा गया था, करीबन 1500 BC में उनकी डेड बॉडी के साथ पहली वाटर क्लॉक मिली थी। Simple pendulum, a small mass that is suspended from a fixed point and allowed to swing
freely under the influence of gravity is called a pendulum. An ideal simple pendulum consists of a small mass like a stone or a metal ball called a bob suspended by a string. When the bob moves from one position and returns to the same position, it is said to complete one oscillation. The time taken to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. For example, if the bob starts from point A, goes to point B and C and returns to point A, it completes one oscillation. तो पेंडुलम का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको एक बॉब के साथ अटैच कर दिया जाता है, एक फ्रीली स्विंग स्ट्रिंग के साथ, जो कि एक साथ आगे पीछे करता है. कहा जाता है कि जैसे ही एक पेंडुलम अपनी जगह से लेफ्ट जाके पूरा राइट जाके वापस आता है तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है. By studying the oscillations of a simple pendulum, the observations can be summarized as follows. The time taken by a pendulum to complete one oscillation, that is, its time period, does not depend on the extent to which the bob of the pendulum is displaced. The time period does not depend on the mass of the bob used within reasonable limits. The time period depends on the length of the string or wire used. Greater the length of the string, greater is the time period, assuming that the string itself has negligible mass. तो आपका जो पेंडुलम होता है, बॉब के वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंडुलम के वेट से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना टाइम लेगा. उसकी जो स्ट्रिंग होती है उस पर डिपेंड करता है. जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी उतना ही लंबा ऑसिलेशन होगा. Fact file. Scientists have found that atoms and molecules or substances vibrate about a mean position. Some clocks, quartz clock, are also based on the oscillation of certain crystals such as quartz. जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मदद से वाइब्रेट करते हुए मीन पोजीशन पे क्लॉक को बनाए हैं. जो क्वार्ट्ज क्लॉक होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको टाइम शो करती है. दिस मीन्स दैट इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज फिक्स्ड, its time period is constant. This was a wonderful discovery. Scientists began to build new clocks based on this property of the pendulum. तो इससे पता चला कि जो पेंडुलम की अगर लेंथ अगर फिक्स्ड है तो वो एक ही टाइम दिखाएगी, टाइम कांस्टेंट रहेगा. और इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप की क्लॉक्स पेंडुलम के बेसिस पे ही बनाना शुरू कर दिया. How fast or slow an object travels depend on the time it takes to travel a certain distance. It is closely related to the measure of time. We will now discuss slow and fast motion and how we can measure it. तो कोई भी चीज़ कितनी तेज से चलती है या धीरे चलती है, वो ट्रैवल कितना करती है कितने गिवन टाइम में, ये उससे पता चलता है. Activity 1. Aim. Calculation of time period of a simple pendulum. Materials required: string, bob and a stopwatch. Procedure. First, construct a simple pendulum. Tie the bob to the string of 1 meter length as shown in the figure. Suspend the string from a peg on the wall. Set the bob of the pendulum in a position of rest. Next, mark the position of the bob on the wall behind it. This is the mean position of the bob. Gently hold the bob and release the bob from its displaced position. When the bob moves from one position and comes back to the same position, it completes one oscillation. Here, as the bob was initially at its mean position, it completes one oscillation when it returns to its mean position. Record the time taken for 20 such oscillations. Record 3 readings. The time period of the pendulum is calculated by dividing the time taken for 20 oscillations by 20. The average of the 3 readings of the time period will give you the actual टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. तो इसकी मदद से आपको एक पेग लेना है, एक स्ट्रिंग लेनी है, उसके साथ एक पेंडुलम को अटैच कर देना है, पेग को वॉल पे लटकाना है और उसको फ्रीली झूले डालने के लिए छोड़ देना है. जितना टाइम जो उसकी मीन पोजीशन यानी कि जो उसकी पहली पोजीशन थी यानी कि स्ट्रेट, जैसे ही वो लेफ्ट राइट और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा उसको कहा जाता है मीन पोजीशन. और ये पूरा होता है आपका एक ऑसिलेशन. आपको 3 रीडिंग्स लेनी है और उसके बाद देखना है कि टाइम पीरियड में डिफरेंसेस हैं या नहीं. डू यू नो मीटर इज द लेंथ मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 2 मार्क्स ऑन अ मेटल बार मेड ऑफ एन alloy of platinum and iridium kept at Bureau of Weight and Measures in Paris. तो मीटर एक वो लेंथ होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग मेटल्स एलॉय, जो एलॉय होते हैं वो एक या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं और ब्यूरो ऑफ मेजर्स में पेरिस में से यूज़ किया जाता है.
Units of time. The standard unit of measuring time is second. The symbol of second is S. The standard unit of time is called basic unit of time. So we can also say that the basic unit of time is second. The larger units of time than second are minute and hour. The symbol of minute is MIN and the symbol of hour is H. Thus, time is normally measured in the units of hours, minutes and seconds. The units of hour, minute and second are related to one another as follows. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. तो आपका जो यूनिट ऑफ टाइम होता है स्टैंडर्ड होता है आपका सेकंड्स. सेकंड्स को यूज करा जाता है एस से, डिनोट करा जाता है एक स्मॉल एस से. सेकंड से बड़ा टाइम आपका मिनट होता है, मिनट को MIN कह के भी डिनोट कर सकते हैं, और मिनट से बड़ा होता है आवर, और आवर को डिनोट करते हैं एच से. एक घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं. द बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम फॉर एक्सप्रेसिंग लॉन्गर टाइम इंटरवल्स आर डे, मंथ एंड ईयर. 24 hours is equals to 1 day, 30 days is equals to 1 month and 12 months is equal to 1 year. आपको लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम दिखाना है तो उसके लिए डे, मंथ और ईयर का यूज करा जाता है. एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, एक हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं, एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं और 12 महीने मिलके आपका एक साल बनाते हैं. The still bigger units for expressing very long time intervals are decade, century and millennium. 10 years is equals to 1 decade, 100 years or 10 decades is equals to 1 century, 1000 years or 10 centuries is equals to 1 millennium. तो उससे भी ज़्यादा बड़ा आपको टाइम दिखाना है तो वो decades में, centuries में और millenniums में यूज होता है. 10 साल मिलके आपका decade बनाता है, 10 decade मिला के बनाता है आपका एक century जिसमें 100 साल होते हैं, 1000 या फिर 100 डेकेड्स आपका मिल के बनाता है एक मिलेनियम. Different units of time are used depending on the purpose for which they are to be used. For example, the time taken to cover the distance between our home and school should be expressed in minutes or hours, in days or months. Similarly, the age of a person should be expressed in years and not in days or hours. The times of historical events should be stated in terms of centuries or millenniums. The ages of stars and planets are expressed in billions of years. 1 billion is equals to 100 crore. On the other hand, the two extremely small units of time which are used for expressing very small time intervals are microsecond and nanosecond. 1 microsecond is 1 millionth of a second, a nanosecond is 1 billionth of a second. उसके बाद अलग अलग चीज़ों को डिनोट करने के लिए आप अलग अलग टाइम फ्रेजेस का यूज करते हैं. जैसे अगर आपको किसी की एज बतानी है तो आप ईयर्स में बताएंगे, ना कि दिन में या फिर घंटों में. अगर आपको किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताना है तो आप सेंचुरी का यूज करते हैं. अगर आपको डेकेड्स के बारे में बताना है आप अलग चीज़ों का यूज करते हैं. तो अलग अलग टाइम पीरियड या अलग अलग चीज़ों की टाइम बताने के लिए आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. डू यू नो द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक टुडे इज एट द यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिसर्च लैबोरेटरी इन वॉशिंगटन DC. इट इज एन एटॉमिक हाइड्रोजन मास्टर क्लॉक एंड इट इज एक्यूरेट टू 1 सेकेंड इन 1 crore 7 lakh years. तो आपकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वॉशिंगटन DC में प्रेजेंट है. वहाँ की लैबोरेटरी में उसे रखा गया है. One of the most famous clocks in the world is at the House of Parliament in London. It is often mistakenly called Big Ben, which is actually the name of its biggest bell. तो आपकी सबसे ज़्यादा फेमस क्लॉक जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में प्रेजेंट है, जिसको बिग बेन भी कहा जाता है, बट एक्चुअली बिग बेन जो है वो उसकी सबसे बड़ी क्लॉक है. Fact file. National Physical Laboratory, New Delhi provides the timekeeping services in India. The clock in use can measure time intervals with an accuracy of 1 millionth of a second. तो दिल्ली में आपका नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है जो इंडिया के अलग अलग जो टाइम जोन्स होते हैं, टाइम पीरियड्स होते हैं, जो टाइम होता है वो यही लैबोरेटरी दिखाती है. Motion. You have studied in class 6th that a body is said to be in a state of motion if its position is changing continuously with respect to time and some reference point. A stationary object near such a body may be taken as a reference point. While traveling in a car, bus or a train, you must have experienced that the trees and buildings seem to be moving back. Each person in the moving vehicle is stationary with respect to other passengers but moving with respect to a reference point outside the vehicle.
The position of a person or thing which does not change with time or with respect to a reference point is the position of rest. One more thing that you learn from this description is that motion and rest are relative terms and we cannot define one without mentioning the other. तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ पोजिशन चेंज करी है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स होते हैं, इनको यूज करा जा सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं आप यूज कर सकते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं. Types of motion. Motion may be classified as uniform and non-uniform. If an object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in a state of uniform motion. For example, a car is traveling at a uniform speed of 40 kilometers per hour. The table given below shows the distances covered by the car with respect to time. तो आपके दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. अगर एक डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में ही कवर करा जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या फिर टाइम चेंज होता रहता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है. टाइम आवर 0, डिस्टेंस किलोमीटर 0. टाइम 1 आवर, डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स. टाइम 2 आवर्स, डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स. टाइम 3 आवर्स, डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स. टाइम 4 आवर्स, डिस्टेंस 160 किलोमीटर्स. टाइम 5 आवर्स, डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे अलग अलग किलोमीटर्स, अलग अलग डिस्टेंस में कितना कितना यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है वो आपको बताया गया है. On the basis of the above table, the graph plotted between the distance traveled by the car and time is a straight line for a uniform motion. Common examples of uniform motion are the motion of planets around the sun, motion of the hands of a wristwatch, motion of the pendulum in a clock, etc. तो आपके जो ऊपर की इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपका अगर ग्राफ बनेगा टाइम और डिस्टेंस का तो वो स्ट्रेट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है. कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जो यूनिफॉर्मली ही मोशन करती हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट्स की रोटेशन हो गई, सन का रोटेशन हो गया, आपकी जो क्लॉक्स होती है उनका रोटेशन, ये सारी यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं. If an object travels unequal distances in equal intervals of time or vice versa, it is said to be in a state of non-uniform motion. The graph shown alongside is plotted on the basis of the above table. The graph for non-uniform motion is not a straight line. The two graphs, uniform and non-uniform, display both time and distance. Hence, such graphs are called distance-time graphs. Do you know how to make a distance time graph? We will discuss the method later in this chapter. तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं ले रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. Speed. A car traveling with a uniform motion along a highway leaves behind a man walking with a uniform motion. What is the difference between these two uniform movements? The movement of a car and that of a pedestrian. The difference is that the car travels faster than the pedestrian. An aircraft moves faster than a car. This means that in the same interval of time, a car covers a larger distance than a pedestrian, and an aircraft covers a larger distance than a car or a pedestrian. तो आपकी जो स्पीड है वो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है. एक पैदल चलता हुआ आदमी जितना टाइम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लगाएगा, उससे कम टाइम एक कार लगाएगी, यानी कि कार की स्पीड पेडेस्ट्रियन की स्पीड से ज़्यादा होगी. एरोप्लेन गाड़ी से भी कम टाइम लगाएगा उसी सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि एक एयरक्राफ्ट की स्पीड एक कार ड्राइवर से और एक पेडेस्ट्रियन से भी ज़्यादा होती है. The body which covers a large distance in unit time moves with a high speed. To find the speed of a body moving uniformly, the distance covered by the body in some time intervals is divided by that time. Speed is equals to distance covered upon time taken, or V is equals to S upon T, or S is equals to V into T, or T is equals to S divided by V, where V is equals to speed, S is equals to distance covered and T is equals to time interval. तो आपका अगर आपको पता लगाना है कि कौन से ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो गिवन है. एक है आपका स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या फिर V इज इक्वल्स टू S
S/T, जहाँ पे V है स्पीड, S है डिस्टेंस ट्रैवल्ड और T है टाइम टेकन। पहला आपका है V इज इक्वल्स टू S/T या फिर S इज इक्वल्स टू V इंटू T या फिर T इज इक्वल्स टू S/V। इन फॉर्मूलेज को इंटरचेंज कर करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। Do you know the instrument which is used to measure the speed of a moving vehicle is called speedometer and the one which is used to measure the distance traveled is called odometer। तो किसी भी चीज़ का स्पीड पता लगाने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ करा जाता है और किसी भी जगह का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा है, उसके लिए ओडोमीटर यूज़ होता है। Speed is the distance an object moves in unit interval of time। तो speed basically एक particular amount of time में आप कितना distance travel करते हैं उसको कहा जाता है। Fact file: The average speed of a fox is 42 miles per hour, lion 50 miles per hour, horse 55 miles per hour, cheetah 70 to 80 miles per hour। Note: mph is equals to miles पर आवर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल्स की जो स्पीड है भागने की वो गिवन है। यूनिट्स ऑफ स्पीड: इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज वेरी स्मॉल द स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इफ द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज द स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपकी स्पीड को यूनिट करने के लिए कितनी अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर थोड़ा छोटा डिस्टेंस है तो मीटर पर सेकेंड, उससे भी छोटा है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड और बहुत ज़्यादा है तो किलोमीटर पर आवर। Fact file: If speed is given in meter per second, then it can easily be converted into kilometer per hour and vice versa. To convert meter per second into kilometer per hour, multiply by 18 divided by 5, and to convert kilometer per hour into meter per second, multiply by 5 divided by 18. Because 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 hour is equal to 3600 second, 1 kilometer per hour is equals to 1000 meter by 3600 seconds is equals to 5 meter divided by 18 seconds। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको 5/18 या फिर 18/5 से उसको डिवाइड कर देना है। Kinds of speed: Number 1, uniform speed. The speed of a body is said to be uniform only when it covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals are. If a car traveling with a speed of 60 km per hour covers 1 kilometer in each minute, then its motion is said to be uniform over 1 minute interval। कोई भी चीज़ अगर एक amount of टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये इक्वल है तो कहा जाएगा कि वो चीज, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है उसका मोशन यूनिफॉर्म है। Number 2, non-uniform or variable speed. The speed of a body is said to be non-uniform or variable if it covers unequal distances in equal intervals of time. Generally, the speed of vehicles such as cars, buses, scooters, etc. are non-uniform. They cover unequal distances in equal intervals of time because of traffic and road conditions. It is not convenient to study speed-distance relationship for a body moving with non-uniform speed. We use the term average speed. The total distance traveled and divided by the total time taken gives the average speed. For example, if a car covers a distance of 100 km in 3 hours and 150 km in next 2 hours, then its average speed can be calculated as follows. Average speed is equals to total distance traveled upon total time taken is equals to 100 plus 150 km divided by 3 plus 2 hours is equals to 250 km divided by 5 hours is equals to 50 km per hour। तो नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड वो होता है जिसमें आपका टाइम और डिस्टेंस चेंज होता रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को जितना आपका टाइम टोटल लगा है उससे डिवाइड कर देना है तो आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। Example 1. Mr. Sharma covers a distance of 250 km with his car in 4 hours. Find the speed of the car assuming its motion to be uniform। तो इस केस में यूनिफॉर्म है। Solution: Given S is equals to 250 km and T is equals to 4 hour। S का मतलब है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है and T is the time taken। V stands for speed।
By applying the formula v is equals to s divided by t, we get v is equals to 250 kilometers divided by 4 hours is equals to 62.5 kilometers per hour. तो इसमें यूनिफॉर्म स्पीड थी तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल जितना भी आपका स्पीड पर आवर लग रहा था उसको निकाल दिया. Example 2. The speed of a car is 60 meters per second. Calculate the distance covered by the car in 30 seconds. Solution. Given s is equals to 60 meters per second and t is equals to 30 seconds. V is equals to s divided by t, or s is equals to v into t is equals to 60 meters per second into 30 seconds is equals to 1800 meter, where 1 kilometer is equals to 1000 meter and 1 hour is equals to 3600 seconds. Example 3. An aeroplane covers a distance of 2736 km in 6 hours. Find the speed of the aeroplane assuming its motion to be uniform. यहाँ पे uniform है तो uniform motion का formula लगेगा. Solution. Given s is equals to 2736 km and t is equals to 6 hours. By applying the formula v is equals to s divided by t, we get v is equals to 2736 km upon 6 hours, which gives us 456 km per hour. Example 4. The distance between two cities is 432 kilometers. A man covers this distance by a car in 6 hours. What is the speed of the car? Also express the speed in meter per second. Solution. Given s is equals to 432 kilometer and t is equals to 6 hours. By applying the formula v is equals to s divided by t, or v is equals to 432 kilometers divided by 6 hours, which gives us 72 kilometers per hour. अब इसमें हमको मीटर पर सेकंड में भी निकालना है. In order to express the speed in meter per second, we convert kilometers into meters and hours into seconds and proceed as v is equals to 432 into 1000 meter divided by 6 into 3600 second is equals to 72 into 10 meters divided by 36 seconds, which gives us 20 मीटर्स पर सेकेंड. तो सेकेंड केस में हमने आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आंसर मिल गया. Example 5. A boy covers 40 meter in 10 seconds, 35 meter in next 10 seconds and 25 meter in next 5 seconds. Calculate the average speed of the boy. Solution. Total distance covered by the boy is equals to 40 meter plus 35 meter plus 25 meter is equals to 100 meter. Total time taken is equals to 10 seconds plus 10 seconds plus 5 seconds is equals to 25 seconds. Average speed, total distance traveled divided by total time taken is equals to 100 meters divided by 25 seconds, which gives us 4 minutes per second. तो इसमें हमने साइड डिस्टेंस को ऐड कर दिया, टाइम को ऐड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज स्पीड मिल गई. Activity 2. To calculate the speed by measuring the time taken by different students to cover a given distance. Mark start and finish lines on the playground. Measure the distance between these two lines with the help of a measuring tape. Call 3 students, say A, B and C. Ask student A to run from the line marked start when you blow the whistle and reach the line marked finish. Now hold the stopwatch in your left hand, blow the whistle and start the stopwatch. When the student A reached the finish line, stop the watch, record the time and divide the distance by the time to calculate the speed. Repeat the same procedure with the students B and C. तो आपको ये स्पीड अगर देखनी है तो आपको एक प्लेग्राउंड में जाना है, स्टार्ट और फिनिश लाइन आपको लिखना है, स्टार्ट एंड फिनिश. बीच का डिस्टेंस आपको देख लेना है कितना है, मेजरिंग टेप की मदद से 3 स्टूडेंट्स को बुलाना है और तीनों को एक एक करके उस पर रन करवाना है. डिस्टेंस आपका सेम ही है, 3 अलग अलग लोग हैं, कितने अलग अलग टाइम में वो डिवाइड करेंगे उसको आपको देख लेना है, उसको आपको रिकॉर्ड करके एक एवरेज स्पीड निकाल देनी है. एक्टिविटी 3. टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स बाय मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन अ गिवन टाइम. कॉल 3 स्टूडेंट्स, से L, M and N. Ask student L to walk briskly in a straight line along the playground when you blow the whistle and stop when you blow the whistle again. Now hold the stopwatch in your left hand, blow the whistle and start the stopwatch. When the watch records 30 seconds, blow the whistle and stop the stopwatch. Now measure the distance from the starting point to the end point with a measuring tape. To calculate the speed, divide the distance by 30 seconds. Repeat the same procedure with students M and N. तो आपको फिर से यही सेम चीज करनी है. इस बार आपको किसी को रन नहीं करवाना है, ब्रिस्क वॉकिंग करवानी है. आपको स्टॉप वॉच लेनी है, स्टार्ट करना है और उसके बाद जैसे ही दोबारा आप विसिल करेंगे आपको स्टॉप वॉच बंद कर देनी है. आपको देखना है कि पहले स्टूडेंट को वही सेम टाइम कितना
लगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, उसको 30 सेकेंड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज स्पीड जो है वो निकल आएगी। सेम प्रोसीजर आपको बाकी स्टूडेंट के साथ दोहराना है। Activity 4. Aim to observe slow and fast motion and calculate the average speed. For this activity, you can use the football field or even the playground. With the help of a measuring tape, measure and mark a distance of 200 meters. Now ask your friends, classmates to travel this distance. A. Walking slowly. B. Walking briskly. C. Running. D. On a bicycle. Measure the time taken by each one to travel this distance with the help of a stopwatch and note your observations as shown in the example in table below. Table. Time taken to cover a distance of 200 meters. Student Alka. Time and speed. Time taken in seconds. Speed in meter per second. Walking slowly. Walking briskly. Running on a bicycle. Walking slowly 95. Walking briskly 75, running 59, on a bicycle 13. Speed in meter per second, walking slowly 200 upon 95, which gives us 2.1. Walking briskly 200 divided by 75, which gives us 2.6. Running 200 by 59, which gives us 3.38. On a bicycle 200 divided by 13 which gives us 15.3. तो इसमें एक स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, चारों एक्टिविटीज करते हुए कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कितनी देर में. You will observe that minimum time is taken to travel the distance on a bicycle, thus it has the maximum speed. Maximum time is taken to travel the distance while walking slowly, so the speed is minimum here. The order of time taken is slow walk, brisk walk, running, cycling. The order of speed is slow walk, brisk walk, running, साइकिलिंग. तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी बाइसिकल पे है, कम से कम टाइम लग रहा है. सबसे कम स्पीड आपकी जब आप पैदल चल रहे हैं धीरे तब है और उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो इससे आपको पता चलता है कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अलग अलग चीज़ों से आपको अलग अलग टाइम लगता है. डू यू नो द फास्टेस्ट बैट इन द एयर इज द बिग ब्राउन बैट विद द रिकॉर्डेड फ्लाइट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर और 15.5 माइल्स पर आवर. तो सबसे ज़्यादा तेज बैट जो आपका एयर में है उसका नाम है बिग ब्राउन बैट. The cheetah is the fastest animal on land, whereas the fastest animal in water is the killer whale. तो लैंड पे आपका जो चीता है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तेज़ी से भागने वाला जानवर है और पानी में जो किलर वेल होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. Fact file. If speed is given in meters per second, then it can easily be converted into kilometer per hour and vice versa. To convert meter per second into kilometer per hour, multiply by 18 by 5, and to convert kilometer per hour into meter per second, multiply by 5 divided by 18. Because 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 hour is equals to 3600 seconds. 1 kilometer per hour is equals to 1000 meter divided by 3600 second, which gives us 5 मीटर डिवाइडेड बाय 80 सेकेंड्स. तो बड़ी ही आसानी से आपको अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में या फिर वाइस वर्सा कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 या फिर 5/18 डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकेंड है उसके हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है. Making a distance time graph. You have read that a vehicle traveling on a road does not move at a constant speed throughout its journey. Now, if you are given the distance covered in every minute or every second, can you calculate the speed of the vehicle? In this case, simply using the formula distance divided by time will not solve the purpose. With this, you cannot get the speed at different points of time. To calculate the actual speed of the vehicle, you will have to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइम या अलग अलग डिस्टेंस लगता है. इसमें आप नॉर्मल फॉर्मूले के साथ नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा. The distance time graph is a line graph. On a graph paper, draw two lines perpendicular to each other. The horizontal line is marked as XCX and the vertical line is marked as YOY. XOX is known as the X-axis. YOY is called the Y-axis. The point of intersection is known as origin O. The two quantities are taken separately on the X and Y axis respectively. तो आपके जो ग्राफ होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक X एक्सिस होता है, एक Y एक्सिस होता है. जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है जो O से डिनोट होता है.
Now let us plot a distance time graph on the basis of the following table, which shows the time taken by a car to travel the given distances. Time in minutes, distance traveled in kilometers. 0, 0. Time 5 in minutes, distance traveled 5 kilometers. Time 10 minutes, distance traveled 10 kilometers. Time 15 minutes, distance traveled 15 kilometers. 20 minutes, 20 किलोमीटर्स, 25 मिनट्स, 25 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे टाइम दे रखा है और उतने ही टाइम में कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा वो गिवन है. नाउ प्रोसीड बाय द स्टेप्स गिवन बिलो. Number 1. Draw the x and y axis on a sheet of graph paper and mark the point where they meet as O. Number 2. Represent the quantities on both the axes. Here, time is plotted on the x-axis and distance is plotted on the y-axis. 3. Next, select a suitable scale to represent the time and distance on the graph. Scales are very important while plotting a graph. Number 4. Mark the values for the time on the x-axis and for the distance on the y-axis respectively. Number 5. Then mark the points of time corresponding to the distance as given in the table. You will see that at 0 minutes the car is at rest, that is the distance travelled is 0. Therefore, first point is on the origin itself. Similarly, after 5 minutes the distance travelled is 5 km. Mark all the 6 points in the same way. Number 6. Join all the points on the graph as shown in the given figure alongside. What do you observe from the graph? The distance time graph in this case is a straight line. This means that car is moving at a constant uniform speed. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है. आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है. एक एक्सिस पे आपको टाइम टेकन लिखना है, दूसरे एक्सिस पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल लिखना है. जैसे जैसे आप देखेंगे, आप जितने भी आपको मेजरमेंट्स गिवन है 0, 5, 10, 15, ये आपको दोनों एक्सिस पे मेजर कर देने हैं. तो आप देखेंगे कि ओरिजिन जो है O, वहाँ पे आपको 0 मिनट्स लग रहे हैं 0 किलोमीटर्स को कवर करने में, यानी कि नो टाइम टेकन टू कवर नो डिस्टेंस. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे, 5 मिनट पे 5 किलोमीटर, 10 मिनट पे 10 किलोमीटर, आपको दिखेगा ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, जैसे कि आपको फिगर में गिवन है. इसका मतलब है कि आपका ये यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है. डू यू नो सम ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ वेरी स्लो स्पीड व्हाइल सम मूव एट अ वेरी फास्ट स्पीड. तो आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही धीरे मूव करते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत तेजी से मूव करते हैं. डू इट, आंसर दीज क्वेश्चंस. अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. Keywords: motion, change in the position of a body with respect to its surrounding over a period time. SI unit, the international system of units with an improved form of metric system. The units of measurements are meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela and mole. Scalar quantity, physical quantities having only magnitude and no direction. Speed, distance traveled by an object in unit time. Periodic motion, motion that repeats itself at regular intervals. Pendulum, a suspended mass allowed to swing freely under the influence of gravity. Oscillation, one complete to and fro motion of a pendulum. तो ये कुछ चीज़ थी, जैसे कि मोशन किसे कहा जाता है, SI यूनिट क्या होती है, ऑसिलेशन किसे कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पेंडुलम किस तरीके से फंक्शन करता है, ये सारी टर्म्स हमने इस चैप्टर में जाने. Points to remember: time is the interval between two instances. In ancient times, sundials, water clocks and hourglasses were used to measure time. Simple pendulum consists of a heavy particle suspended from a rigid support. One complete to and fro motion of a pendulum is called an oscillation. Time taken to complete one oscillation by a pendulum is called its time period. The speed of an object is defined as the distance travelled by it in per unit time. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time. A body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. The time distance graph for a uniform motion is a straight line. Speed of an object in a particular direction is known as its velocity. तो हमने इस चैप्टर में देखा कि टाइम किस तरीके से पहले मेजर करा जाता था,
किस तरीके से पेंडुलम की डिस्कवरी हुई, पेंडुलम के बाद क्वार्ट्ज वॉचेस बनी, अलग अलग सन डायल्स, जंतर मंतर, सन की पोजिशनिंग, शैडोज की पोजिशनिंग से आपको किस तरीके से पता चलता था कि क्या टाइम होता है, ऑसिलेशन क्या होता है। उसके बाद आपने स्पीड देखा, किसी भी एक चीज़ ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है उसकी वेलोसिटी कहा जाता है। किस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी निकाल सकते हैं, उसके भी हमने फॉर्मूलेज आज देखे। सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है।